Welcome on SB Scholars Academy. If you are preparing for NT UGC NET JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon, as this channel is under professional experts. We are also providing some kind of study material with the YouTube videos. You can just prefer that for just grace up your NET preparation. That is include previous year question bank, practice set question bank, quick revision notes. It is also providing for the combined and the individual branches. So you may contact on SB Scholars Academy. So basically in this video we will talk about extension teaching method, जो कि हमने इस पे पार्ट 1 भी ऑलरेडी बनाया है और उसमें हमने आपको बताया है व्हाट इज एक्सटेंशन टीचिंग मेथड और अकॉर्डिंग टू यूज़ हमने उसमें बात करी है. सो यू फॉर दैट यू कैन सी माई पार्ट 1, देन यू कैन सी माई पार्ट 2. सो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड इज़ बेसिकली जब हम किसी तरह का न्यू नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, किसी तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज़ हम रूरल एरियाज़ में जाके बताते हैं, गाँव में जाके बताते हैं. जैसे कि जो महिलाएँ होती हैं वहाँ पे वुमेंस होती हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द मशीन यूसेज. मे बी इट कैन बी सीन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग. सो हम उनको मशीन के द्वारा कैसे आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, कैसे आप मशीन के द्वारा चीज़ों को बना सकते हैं, वो हम उसमें उनको पढ़ा सकते हैं. दैट इज़ डन बाय द एक्सटेंशन एजुकेटर और द एक्सटेंशन प्रोफेशनल. टाइप ऑफ मेथड की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इट कैन बी अकॉर्डिंग टू फॉर्म. इस वीडियो में हम बात करेंगे. इन द लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट अकॉर्डिंग टू यूज़. तो इट इज़ बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन एंड द विजुअल कम्युनिकेशन. तो 3 तरह से कम्युनिकेशन पे इस पर हमारी बात की जाती है. अकॉर्डिंग टू फॉर्म पे अगर हम बात करते हैं तो एज अ नेम सजेस्ट लाइक ओरल कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्पोकन कम्युनिकेशन. क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओरली बोलते हैं. लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल्स हेयर. दैट इज़ बाय द वर्ड्स, दैट इज़ बाय with the using of the words by is like you can say audio communication. So you can see the examples here like telephone calls, radio, officials calls, farm home visit, journal. So it can be like face to face conversation. It may not be a face to face conversation, but it will be oral communication. I can see the expression, I cannot see the expression. तो इट इज़ बेसिकली अ टेलीफोन कॉल जिसमें आप दोनों ऑडियो पे रहते हैं. देयर इज़ नॉट एज सच काइंड ऑफ फेस एक्सप्रेशन. यू कांट एबल टू सी द फेसेस ऑफ द अनदर पर्सन दैट whom you are contacting. So it is basically a kind of the oral communication. So basically जो NTA NET आपसे इस पे पूछता है from the types of your communication, that is basically examples आपको दे दिए जाते हैं and you just have to find out the which communication is under which type of communication. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन की. सो बेसिकली रिटर्न कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ कम्युनिकेट. So written communication is basically when we are communicating by the letters, when we are communicating something in the written form. That you can see the examples like bulletin, leaflet, folders. Basically it can be a mass. So basically it is a can be used in the mass communication. मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हमें बहुत सारे लोगों को, 100 लोगों को या मोर देन 100 पीपल्स को हमें एक साथ इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है, तो इट कैन बी डन बाय द फोल्डर्स, इट कैन बी डन बाय द लीफलेट्स, इट कैन बी बाय द बुलेटिन्स. हमें समटाइम अपने पर्सनल लेटर्स लाइक ईमेल व्हाट इज़ लाइक इन दिस टेक्नोलॉजी आई कैन से ईमेल इज़ अ written or it is a written communication. I'm just writing on some kind of the email and I'm just forwarding it. So what it is that it is a written communication कि मेरे को कुछ लिख के मैं forward कर रही हूँ but the person is not able to see my expression, the person is not able to see my audio. So that is considered as a written communication. So basically that is considered as a written communication. So again the examples is important from the exam point of view. They may give you a difference, they may give you in the matching form, they may give you something like that. So it is just to be seen by you with the presence of the mind कि आपको examples कौन सा किसके अंडर आता है. तो आपको concept आपको इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि oral communication can with the audio, written communication can be in the written form. May not I am able to see the gestures what the another person is giving expression while writing. I'm not able to see the expression what the person is able to while in my audio. So it is just basically considered as a oral or the written communication. So you can see the example like news article, personal letter, leaflet or the bulletins. Next is a visual communication, that is also known as a object communication, जिसको हम देख के हम visualize कर सकते हैं the person is what is saying. So it can be kind of result demonstration. On the labs I'm just doing any kind of the demonstration जो उसका result होता है. So that is considered as a visual communication.
communication. Another one is a motion pictures or the movies or the charts, slides, film strips, model exhibits. So basically it is can be, you can see the film stress, उसमें आपका ऑडियो वीडियो दोनों चलता है, आप देख सकते हैं. मोशंस पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं. मूवीज़ इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. हम देखते हैं बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनाई जाती हैं, दैट इज़ some have any kind of behind that movie you can see that some kind of the message that is they are giving. So basically that is a visual communication, that they want to communicate something to us. So there are the many example of such type of movies that are basically made. So in the charts we are using some kind of the charts. So basically in the poster presentation, in the oral, in the various conferences, the workshops, there is some kind of the poster presentation. तो आप उसमें देख सकते हैं हम चार्ट को represent करते हैं something on the poster. So that is also the visual communication, that by visualizing that chart I am able to see what the chart is saying, what the chart have that objective. So that is considered as a visual communication. So basically not to be confused among three type of forms like oral, written and the visual. Oral is just by audio, written is by just writing some communication, writing some messages, and visual by visualizing, by just seeing that object I can able to see the communication. That is considered as a visual communication. So this is all about the extension teaching methods, basically the types of the teaching methods. So thanks for watching my video. Just subscribe my channel and just press the bell icon so you will be updated with my channel. So thanks for watching my video. Keep update, keep eye on the channel. So stay safe, stay happy. All the best for your anti-net preparation.